Ever tried giving a feedback to a colleague or a team member and felt absolutely stuck with it? Well, you want to say what you honestly feel, but you also don't want to hurt the other person. Today, we solve this problem for you because today's video we discuss how to give constructive feedback at workplaces. Hello, my lovely Luminers. Welcome to the Laltain, a venture to psychoeducate India. I'm Priyanka Kharb, a counseling psychologist, and I am obsessed with psychology, spirituality, and pretty much anything that makes us glow and grow from within. मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने माइंड को डीपली समझें ताकि एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग जिंदगी जी पाएं. So let's start with learning how to give a constructive feedback. Giving a constructive feedback is an art. It's a skill that helps you transform your relationships personally. क्या आपको पता है कि 2024-25 का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे टॉपिक क्या है? Well, it's mental wellness in workplaces. In today's time, people are so stressed at their workplaces that the Organization of Mental Health had to come up with an entire year just dedicated to this topic. So in all of this, giving a constructive feedback is really important to learn. To make this video easier, I've divided it into 3 parts. सबसे पहले हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आखिर होता क्या है. रिमेंबर, जब हम लोग अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते हैं तो हमारी सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ती है, बट हार्डली हमको कभी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है. But when we start working in real time, we realize the importance of working relationships, how to talk, how to give feedback, how to draw boundaries. And that is why this topic becomes very essential for us to learn. In this section, we will exactly understand theoretically what constructive feedback actually looks like. Second, हम ये सीखेंगे कि क्या steps follow करे जा सकते हैं एक effective feedback देने के लिए. एज्यूम करिए कि आपके टीम मेंबर ने आपको कोई रिपोर्ट लाके दी या कोई काम किया आपके लिए, या फिर उसके बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो कि आप चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करे. वेल, इन दिस केस, व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स दैट यू कैन टेक so that the other person feels motivated and उसके confidence को भी harm ना हो. Lastly, Priyanka's bonus insights. All the other factors that are important like emotional intelligence, timing of giving the feedback, all of this will also be covered in this video. तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें so that you can take your feedback game to the next level. Let's first understand कि feedback का spectrum क्या होता है. इस रेंज की एक तरफ होता है डायरेक्टिव फीडबैक और दूसरी तरफ होता है सपोर्टिव फीडबैक. जब भी आपका ध्यान टास्क के ऊपर फीडबैक देना है कि ये रिपोर्ट अच्छी है, अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, यू आर टॉकिंग अबाउट द टास्क, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, देन दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव फीडबैक. But when your focus is not on the task but the person who's completed the task, इंसान की कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, मोटिवेशन लेवल, उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, then it's called supportive feedback. If the task which is completed well, it's meeting your expectation, then giving any of these feedback works for the other person. But it becomes tricky when you have to point out mistakes and improvement gaps. That is when we want to aim for something called as a constructive feedback. Constructive feedback clear instructions भी देता है पर encouraging भी होता है, improvement gaps भी बताता है लेकिन दूसरे को hurt भी नहीं करता. Let's understand it with the help of an example. एक जूनियर ने आपको एक रिपोर्ट लिख के दी एंड उसमें कुछ फ्लॉज हैं. सो डायरेक्टिव फीडबैक वुड बी, ये रिपोर्ट सही नहीं है, टेक इट बैक, रीडू इट. वेरी वेरी फोकस्ड ऑन द टास्क. सपोर्टिव फीडबैक वुड बी जहां पे आप बोलेंगे बहुत अच्छा किया आपने, अगली बार से इंप्रूव करना. यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स मोरल. But constructive feedback will be something different. I love the way that you've structured the report. It's very organized. We just need to focus on section 3 and can we just work a little more to make it stronger? See, in this, you first start off telling what works for you in the effort that the other person has put in the report. Already the person feels a little relaxed in your company. And then you point out what needs to be worked on. Very specific about what needs to be worked on. Let's take another example. You say to your junior, तुम्हारी तरफ से डिले था जिसकी वजह से हमें क्लाइंट मीटिंग रीस्केड्यूल करनी पड़ी. Well, इसमें we are already starting with an accusatory tone.
वी आर यूजिंग द यू, द तुम. इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक दो बारी तो वो सुनेगा, उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करेगा, लेकिन जब ये ज्यादा होना शुरू हो जाए तो दो चीजें हो सकती है. या तो उसको आदत पड़ जाएगी एंड मेंटली ही विल शट हिमसेल्फ डाउन टू द फीडबैक दैट यू आर गिविंग, या फिर उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट होगा. इन बोथ द केसेस योर वर्क प्रोडक्टिविटी विल गेट हैम्पर्ड. तो इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से पिछले हफ्ते बिकॉज ऑफ द डिले इन द रिपोर्ट वी हैड टू रीस्केड्यूल द क्लाइंट्स मीटिंग. कैन वी जस्ट लुक इनटू अ सिस्टम दैट दिस डजंट हैपन अगेन? सी, जैसे ही ये फीडबैक दिया हमने इसमें यू एलिमेंट हटा दिया. वी स्पोक अबाउट द सिचुएशन एज अ फैक्ट, whereby we said कि पिछले हफ्ते की रिपोर्ट डिले की वजह से इट इज अ फैक्ट. सेकेंडली, हमने उसको ऑफर किया some help to make a system around what can be done in a future strategy. That means we've suddenly shifted the entire focus to being solution oriented rather than blame oriented. Now that we are clear about what constructive feedback is really about, let's learn how to actually go about it in real time. Suppose you have to give feedback to a person on a task that has been just completed. या फिर उसका रिव्यू है और आपको उसके परफॉर्मेंस के बारे में अपनी कंक्लूजन्स और अपनी ऑब्जर्वेशंस देनी है. सो व्हेन ही इज कमिंग इनटू योर स्पेस, फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ टू हैव अ ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? सी, अपना इंटेंशन सेट करो. वेदर आपका इंटेंशन सिर्फ अपना गुस्सा निकालना है, उसकी गलती पॉइंट आउट करना है, या फिर आप एक्चुअली चाहते हैं कि उसका वर्क इंप्रूव हो एंड इन टर्न आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस बेटर हो. Psychological researchers say that when you have a growth-oriented mindset, your body language, your tone, the words that you choose automatically get set for being empathetic and still effective. Second, start learning and developing a true leader's attitude. What is a true leader really? Have you ever heard of the proverb that a leader is as good as the team, which means कि आपकी performance as a team leader is as good as the performance of the collective team. एक leader का काम ये नहीं होता है कि दूसरों को correct करो और उनको बताओ कि ऐसे करना है वैसे करना है. एक leader की जिम्मेदारी सबसे पहले ये होती है कि वो अपनी टीम को इतना comfortable feel कराए. He always sets his team members for a success, and slowly you will see that the rapport that you have with your team members actually starts getting reflected in the work that they are doing. Third, observations over judgments. Judgment-based feedback will always set the other person in a defensive zone. जहाँ पे even in the first sentence as you utter it, उसका दिमाग अपनी explanation and reasoning देने में लग जाएगा कि उसका काम पूरा इसलिए नहीं हुआ because he was sick or maybe there was some problem at home. So you've anyway sent the person in a very defensive mode by being judgmental about it. However, observation-based feedback is neutral. It talks about facts, it talks about the situation, the circumstances, the task, but not about the person's personality. Fourth, use I sentences. See, just a small difference I will show you. If I say, you did not complete this task versus I feel that this task needs more work. When I use I sentences, I still convey the same meaning, but without sounding very accusatory. Fifth, avoid using infinity statements. What are infinity statements? Any statements which is like a blanket. It's like a complete blanket statement. For example, using words like always, never, हमेशा, कभी नहीं. जैसे कि अगर एक इंसान ने 2-3 बारी एक काम नहीं पूरा किया and then we go by saying तुम तो हमेशा लेट आते हो. You know, so instead of really focusing on the task, you're actually telling the person that उसकी personality ही खराब है इस मामले में, which is not something a good leader does. Let's take an example here so that जितने points हमने अभी तक discuss करे हैं वो आपको और clarity से समझ आ जाए. Incorrect feedback. तुम हमेशा deadlines miss करते हो. Well, why don't you think what would be the right way to say the same sentence? The right way to say this is, पिछले 3 projects में deadlines miss हुई हैं. Can we figure out कि what are the challenges that you're facing so that we can make a system around it and improve from next time?
सी, इसमें हमने यू सेंटेंस ना यूज करके सिचुएशन के बारे में बात करी एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन. देन वी ऑल्सो रिमूव्ड द इन्फिनिटी स्टेटमेंट, जिसमें हमने पहले बोला था तुम हमेशा ऐसा करते हो. वी रिमूव दैट, वी पुट अ टाइमलाइन टू इट. पिछले 3 प्रोजेक्ट्स में ऐसा हुआ है. सो नाउ लेट्स गो टू द 6th पॉइंट. डोंट बी वेग इन योर फीडबैक, बी स्पेसिफिक. सिर्फ ये कह देना कि ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है, बेटर करके लाओ. बेटर किस तरीके से? That's what has to be told in a feedback. Otherwise, it becomes too vague for the other person. 7th, first always start with what you liked in that task. ऐसा तो हो नहीं सकता that the entire effort of the other person was completely wrong. I'm sure you can find some things that were good, even if it is the effort that is put by the other person. तो हमेशा पहले feedback अच्छी चीजों से, दूसरे की तारीफ से शुरू करें. Next and very important, which most of us miss, इज कि एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी रखो टू नो कि उस इंसान से वो काम क्यों नहीं पूरा हुआ या उसने अपना बेस्ट क्यों नहीं दिया. एक उसका भी कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा. उस रीजन को जानने की एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी आप में एज अ टीम लीडर पक्का होना चाहिए. लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज गिव अ वे आउट टू द अदर पर्सन. What do I mean by that? A futuristic approach. Don't leave the other person hanging with all these technical words that you've given to the person. एक plan of action बनाओ कि exactly उसको करना क्या है अब. So now that we've discussed all the steps that you can take to give a constructive feedback, we finally come to our last section, which is Priyanka's bonus insights. Guys, feedback सिर्फ feedback के बारे में नहीं होता है. You have to also consider कि आप किस tone से बोल रहे हैं. What are the timings? Are you being aware of the emotional state the other person is in? So, feedback देते समय अगर आपको लगे कि the other person is feeling a little stressed, बहुत obviously आपको लग रहा है उसकी body language से, you can always say कि you are feeling a little stressed. एक ब्रेक लेते हैं and we'll continue this review session after a break. This is called emotional mirroring. ऑल्सो आपको पैराफ्रेजिंग यूज करना चाहिए, विच इज कि आप दूसरे इंसान के वर्ड्स को समराइज करते जाएं. जैसे कि आप बोलें कि ओके, मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं कि ड्यू टू द एक्स्ट्रा वर्कलोड दैट यू रिसेंटली बीन गिवन, इसकी वजह से आपके काम में डिलेज आ रहे हैं. एम आई करेक्ट? This is called paraphrasing. A very famous psychologist by the name of Daniel Goleman says that emotional intelligence is one of the most important things that can make your workplace more fulfilling for you and increase the job satisfaction for all your team members. Also, the timing of the feedback matters. Very delayed feedback. आज से 2 हफ्ते पहले तुमने वो कहा था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, well, that will just completely dilute your feedback. You have to be immediate. अगर अभी presentation में कोई flaws थे, probably after the presentation, call the person and say this presentation can be worked on and these are the points that can be added into. So timing also matters a lot. Chip and Dan Heath की book The Power of Moments clearly specifies that timely feedback is as important as the rest of the things we've discussed for leading to better productivity at workplaces. Finally, always remember to follow back. अगर आपने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाई है उस काम को बेटर करने के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गो बैक टू द पर्सन एंड आस्क कि या इज दैट वर्किंग फॉर यू और शुड वी फर्दर डिस्कस इट? इज दिस गेटिंग बेटर फॉर यू और नॉट? रिमेंबर द ट्रू टीम लीडर्स एटीट्यूड. तो आज की वीडियो में हम सब ने सीखा कि what is the true meaning of a constructive feedback, उसकी importance क्या है work places में, how emotional intelligence helps you make better relationships at work and increases the productivity of your team. We also learned what is a true leader's mindset and to be solution oriented rather than blame oriented. I hope this video has helped you. To make this learning a little fun, I'm going to tell you a wrong way of giving feedback and you have to tell me in the comments below कि एक constructive और empathetic feedback क्या हो सकता है इस sentence की जगह. The wrong feedback is you cost us a major client. अगर ये वीडियो आपको helpful लगी तो please share it with all your colleagues and friends so that we can make workplaces wellness oriented. Don't forget to subscribe to the Laltain for such psychology-backed content where we keep discussing and learning more and more about how to live a healthy, fulfilling life.
Also, read the description below because I've listed few books on the same topic just in case you want to dig deeper into this. I will see you in the next video.